Sometimes I feel like my mind is too messed up to be an artist, but also art is the only spiritual practice that keep me sane. It is the only spiritual practice that I can do on a regular basis. And I think it is the only spiritual practice that can heal me. Jane unjane, we all are going through some kind of healing journey. But how to heal when you don't even remember? Do you remember all your childhood traumas? Sometimes we are not even conscious enough. क्योंकि without consciousness, without awareness, without clarity, healing कैसे possible है? After all, we evolve through awareness and consciousness. But even without knowing every minute detail of whatever happened to you, you still can heal yourself. Yes. I constantly used to feel like something going on inside of me that keep on bothering me, that is not letting me be myself. And the moment you realize that something is off, something is wrong, healing वहीं start हो जाती है. Just setting the intention is enough that I am ready. Yes, I am ready to heal myself. क्योंकि हमारी हीलिंग में, हमारी ग्रोथ में, खुद को चेंज करने में अगर कोई सबसे बड़ा हर्डल है, कोई सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, तो वो हम खुद हैं. You just need to be open and receptive enough, overcoming the fear of facing that adversity again and again. बस इतना कर लेना ही काफ़ी है and things will fall in place because universe has your back. I'm ready to heal whatever needs to be healed within me. I'm ready to heal whatever needs to be healed within me. That's enough. Yes, this statement is so powerful. It's really enough. फुल मून आने वाला है 9th of October को और ये बेस्ट टाइम है इफ़ यू वांट टू रिलीज समथिंग, इफ़ यू वांट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन, फ्रॉम सम पास्ट मेमोरी, सम चाइल्डहुड ट्रॉमा और एनीथिंग. रिलीजिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है. अब बात कर लेती हूँ इस मंडला की, इस वॉल आर्ट की. तो ये मंडला कंप्लीट करने में मुझे अप्रॉक्स 15 आवर्स 15 घंटे का समय लग गया. और समय ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैंने कुछ डिज़ाइन माइंड में सोचा हुआ नहीं था और जैसे जैसे मतलब मैं बनाती गई, जो जो डिज़ाइन आता गया, कभी कुछ गलत हुआ तो उसको हटा करके दूसरा डिज़ाइन किया, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया. वरना मैंने एस्टिमेट किया था कि 10 आवर्स में मैं ये मंडला कंप्लीट कर लूँगी, मुझे 15 घंटे लग गए. जब मैंने ये मंडला बनाना शुरू किया था, कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि बनाना है क्या. मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी. पिछले 2-3 हफ्ते से मुझे कंटिन्यूसली बैक पेन हो रहा है और जैसे जैसे ये बनता गया, आई वुड से ये मुझे दूसरी ट्रिप पर ले गया कम्प्लीटली. आर्ट हील करती है ऑब्वियसली, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये सिर्फ मुझे मेंटली नहीं है, मुझे फिज़िकली भी हील करती है. और आई एम रियली ग्रेटफुल. माँ सरस्वती का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैप्पी हीलिंग.